हेलो एवरीवन, वेलकम टू शर्मा जी के रोबोट। मेरा नाम अखिलेश है। आज हम बना के देखेंगे स्ट्रीट लाइट कंट्रोल सिस्टम। आपने देखा होगा जैसे ही हम बाहर निकलते हैं और शाम का टाइम होता है तो अपने आप स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाती है। और जैसे ही मॉर्निंग टाइम में हम जाते हैं और स्ट्रीट लाइट आप देखते हैं कि अपने आप टर्न ऑफ हो जाती है। तो ये कैसे होता होगा? ऐसा तो है नहीं कि कोई एक पर्सन है वहां पे, उसको वो कंट्रोल करता है, ऑन ऑफ करता है स्विच को। ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे एक सेंसर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं एलडीआर सेंसर। एलडीआर सेंसर स्टैंड्स फॉर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। उसको हम लाइट डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही सनलाइट उस सेंसर पे पड़ती है, क्या होता है, वो सारी स्ट्रीट लाइट को अपने आप ऑफ कर देता है। और जैसे ही अंधेरा होने वाला होता है तो वो क्या होता है, सनलाइट का इफेक्ट जैसे जैसे कम होता जाता है, स्ट्रीट लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। तो वो चीज हम बना के देखेंगे विद द हेल्प ऑफ टिंकर कैड। उसमें हम 3 एलईडीज का यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप्स कलर्स का, और एलडीआर सेंसर का, और माइक्रो कंट्रोलर। तो आइए हम देखते हैं कैसे बनाते हैं स्ट्रीट लाइट कंट्रोल सिस्टम। टिंकर कैड एक वर्चुअल सर्किट मेकिंग प्लेटफॉर्म है। सो इसमें हम क्या क्या यूज करेंगे? पहले लेंगे एक हम ब्रेडबोर्ड, जिसमें हम कंपोनेंट्स को माउंट करेंगे। आर्डिनो, जिसमें हम कोडिंग और प्रोग्रामिंग करेंगे और कंपोनेंट्स को कनेक्ट करेंगे। 3 रजिस्टर, वी हैव टू टेक 3 एलईडीज, डिफरेंट कलर एलईडीज। ब्लू we can take, or green also we can take. 3 registers and 1 register for LDR sensor. So we can search here photo register and take this. Okay. So one by one we have to connect all these components, mount. So you can see the LEDs are 2 terminals device, anode and cathode. This one is anode and this one is cathode. And we have to mount this LDR sensor also here. Now connect this register with the LED's cathode. Click all this resistor. So you have to connect 220 ohm resistors with LED's cathode. 220 ohm. And we have to take the 1 kilo ohm resistor for this LDR sensor. Okay, now we have to power up this breadboard with the help of ground pin. We have to supply the negative power supply and take the black color wire. This 5 volt we have to connect with this 5 volt power supply. So we have to connect this resistor with the negative power supply and take the black color. It's your choice which color you can take for any connection. You can choose according to your choice. And another this LDR sensor, positive. So we have to connect with the positive power supply. Yes. Now we have to connect this LDR sensor terminal 1 with analog input, because whenever you have the sun rays touch this LDR sensor, deactivate. So we have to take the output from here and change the color of this wire. Now we have to connect this LEDs with any digital pin. So first of all, we have to connect this one. Any digital pin you can connect. I am connecting with number 3, the first LED. Take the different color. This one I have to connect with numbers 5. Take any color.
number 6. Now we have to connect all these 3 LEDs with positive terminal, uh, digital pins. So we have to take the output from all the digital pins. So now you can see the circuit is completed. So click on the coding part and remove predefined coding blocks. So now we have to do the coding. First of all, we have to take a condition. For condition, you have to click on the control block, take a conditional block if then else. So I want to play with the intensity. So you have to take the comparison block. So from the math block, we have to take this one and take this the less than or equal to and read analog pin A0. We have to connect here and take the value 100. Now, if this condition will follow, that we'll do set pin number 6. We can duplicate this block also again. Pin number, we have to connect it 6, 5. Okay, number 5. And now we have to duplicate and take the pin number 3. So 3 pins are there and we have to duplicate this block and connect pin and take all the pins low. Now we can check our program. So you have to click here and click on the start simulation block. So you can see here the LEDs are glowing because the sunlight intensity is very low. Whenever you have to move towards the sunlight, you can see LED is off. Whenever you have to move towards the dark light, LEDs will be glowing. So this is our project. So with the help of this, we can show the how to control the street light automatically. So thank you so much.